Yes sir. You have to switch this screen share. Yes sir. हो जाएगा वो भी। Screen अब जैसे कैमरा आ रहा है, हाँ फिर अगर स्क्रीन चाहिए होगा तो वो यहाँ से हो जाएगी। दोनों नहीं हो सकता। दोनों एक साथ? एक छोटे से विंडो में आ जाए। छोटे से विंडो में ये कैमरा हाँ हो जाएगी। डेस्कटॉप से आएगा। हाँ समथिंग लाइक दिस। वो ओवरलैप हो रहा है, थोड़ा सा इस साइड और। सर चल नहीं रहा क्या कॉलर माइक मैं क्या बताऊँ सर, कल तो चल रहा था चेकिंग के लिए आपकी जिम्मेदारी क्या सर? कल चल रहा था सर ठीक है। नहीं चल रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें इसका ये कैमरा भी डाल दो, ये इसका हाँ, फिर दोनों साइड में आ जाएगा। क्यों? स्लाइड अरे ये कैमरा भी तो आ सकता है। हाँ तो ऐसे कर देना, ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे ये स्क्रीन, ये छोटा ये इसका कैमरा, इसका कैमरा दोनों लगा दो। और क्या, फिर वीडियो आ जाएगा, स्पीकर भी आ जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा, वो उसको ऐड ही तो करना है। लगा देंगे ऑफ करके। राइट साइड में छोटा सा विंडो बना के दोनों साइड में, और यहाँ प्रेजेंटेशन आ जाए बड़ा सा। हाँ इसलिए इन्होंने एक सेटअप बता दिया। मैं कल सेटअप बहुत अच्छा लगा पीछे वाला ना, इसको मेन सर ये विजन कैंडिडेट के लिए हम जरूर के भागे स्टैंड वैंड लेके आइएगा यहाँ पे, वहाँ पे स्टूल नहीं है। ये शॉर्ट हो गया है। कुछ बेटा हेलो हेलो दिस माइक विल बी गुड ना, मतलब कॉर्डलेस मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो ये जो है तो हम लोग ही बोलेंगे। तो मतलब आप किसी के साथ आए? हाँ, मैं मिस्टर बोयरी के साथ आया हूँ। एक्चुअली हमारे जो कॉर्डलेस है वो जस्ट वी आर चेकिंग इट्स, ओके, वो शॉर्ट हो गया है।
हाँ तो प्लग इन करने पे शॉर्ट हो जा रहा है। मतलब Plug in कॉर्डलेस करने में- यहाँ वाला collar हाँ वाला। इसको पकड़ के बोलो ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चार्जर लगा दिया, चार्जर लगा दिया। पॉइंटर लगा दिया। मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे बैठा हूँ। इसे कहाँ रखूँ? इसे कोई मजे ना ले बस। इसे पोस्टर चला, पोस्टर है, कौन सी गाड़ी? यही तो है। लगाओ फटाफट, यही है। बैनर जो है, फोटो जो खींचेंगे बैनर आंची ना, इसको बड़ा करो, स्लीप मोड से हटा देना। अरे इसका वो पावर मोड बचे हैं सूरज, पावर मोड ऑफ कर दे इसका। हाँ ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। अरे बड़ा करो आप, इसमें ये ड्रॉप हो जाएगा सूरज। शुरू से और ऑफ करते हैं। हल्का से लेफ्ट करो, लेफ्ट लेफ्ट करो। हाँ ये गेस्ट ऑफ ऑनर है ना, फुल स्क्रीन कर दो ना इसको। फुल स्क्रीन करो। PDF है ना सर ये? वीडियो फुल स्क्रीन होती है। फुल स्क्रीन करो जरा इसको। फुल स्क्रीन ही है। नहीं नहीं करो जरा, फुल स्क्रीन नहीं है बेटे। ऊपर आ जाएगा। स्टेप दबा। फुल स्क्रीन नहीं है यार। बाकी ये है क्या कहते हैं, एज में, एज में तो बवाल हो गया। हाँ भाई, स्टैंड सस्टेन पेडल और छोटा का थोड़ा सा स्टैंड और सस्टेन और छोटा का थोड़ा बड़ा का। ये अडाप्टर देखो कहाँ लगा है। क्या फर्क पड़ता है? वॉल्यूम यहाँ से तेज कर लेना, यहाँ से धीरे रखना, एकदम आगे भी। ऑफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेकंड वहाँ से आगे भी जाओ। अरे बंद कर दे अभी, जब यहाँ से बंद करो। कितना लेके आया? ये उनके लिए मैं स्क्रीन लेके जा रहा था कॉलेज। आप नहीं ले अचानक से प्लान में और स्टैंड है उसके पास? क्या स्टैंड स्टैंड ये लोग परफॉर्म करके लेते आएंगे अपने साथ। हम हाँ, और पेडल भी। यहाँ कनेक्शन दे दिया ना इसका, इसका वॉल्यूम चेक कर लेंगे। बाकी वो भैया आएंगे, वो कर लेंगे, परफॉर्म करेंगे। ज़्यादा तेज मत रखना। हाँ, बड़ा नहीं है वो। अरे इतनी बड़ी कॉर्ड नहीं है। बीच में फॉर्मेशन बंद होगा। नहीं वो ऑफिस में चला गया। हमने जब इसी में यूज़ करा तब लगा के यूज़ करा, चार्ज हो रहा होगा तब। इधर नहीं हो रहा बस चार्ज। अभी लगा देगा तब तक। हाँ भाई, कितने परफॉर्मेंस हुई? लाइव चल रही है वीडियो। कैसे? पीछे है, ठीक है।
दबाना पड़ेगा। हेलो, हाँ बोल। इसमें तो नहीं होगा। वापस नहीं आएगा वो ऑन करना लाइव है, लाइव है। काम करके चल ही नहीं हमारे साथ मजा ले तो दिक्कत हो जाएगी। मैं माँ को बोल देता हूँ। मुझे पैड्स तो चाहिए ना गिटार की पीछे। गिटार आपने को हाँ गिटार में अपने नहीं मतलब अगर महंगा रहता तो आप क्या सिखा रहे इससे मैं करता ऑपोजिट करके सस्टेन करके पैड्स लगा देता हूँ। पैड्स वो आ गए हैं, यहाँ आ रहे हैं। कोई नहीं तू अब हमारे साथ ही जा रहा है। हम कह रही हूँ अभी वो लोग कैसे वीडियो नहीं बस आ गए वो लोग बस चला देते नॉट भास्कराचार्य का वो वाला वीडियो नहीं वंदे भास्कराचार्य वाला जो सॉन्ग है वो चला दो आ रहे वन्दे भास्कराचार्य वन्दे महाविद्यालय वन्दे भास्कराचार्य
महाविद्यालय वैश्विक शिक्षा का भव्य केंद्र विज्ञान विधा का कुशल केंद्र सुरभित और परिसर विशाल गर्वित लैपटॉप की आवाज कम कर। नव प्रखर ज्वाल सदनमाचार का संवाहक नव सृजन शक्ति का आराधक सक्षम उन्नत 35 का ज्ञान कौशल क्षमता अनुपम उड़ान युग श्रेष्ठ प्रबंधन निधियां मानक संचालित गतिविधियां वंदे भास्कराचार्य वंदे महाविद्यालय वंदे भास्कराचार्य वंदे महाविद्यालय आचार्यों का आशीष सफल विद्यार्थी मन संस्कार सरल जिज्ञासा पूरक अमर ध्यान लौकिक विषयों का परम ज्ञान अंतर चेतन की अमित चाह गतिशील समर्पण का प्रवाह साक्षी अनमोल धरोहर का निर्मल जल ज्ञान सरोवर का नवयुग का पावन अभिनंदन हम करते नित इसका वंदन वंदे भास्कराचार्य वंदे महाविद्यालय वंदे भास्कराचार्य वंदे महाविद्यालय वंदे भास्कराचार्य वंदे महाविद्यालय वंदे भास्कराचार्य वंदे महाविद्यालय वैश्विक शिक्षा का भव्य केंद्र विज्ञान विधा का कुशल केंद्र सुरभित और परिसर विशाल गर्वित प्रांगण नव प्रखर ज्वाल सदनमाचार का संवाहक नव सृजन शक्ति का आराधक सक्षम उन्नत उत्कृष्ट ज्ञान कौशल क्षमता अनुपम उड़ान युग श्रेष्ठ प्रबंधन निधियां मानक संचालित गतिविधियां वंदे भास्कराचार्य वंदे महाविद्यालय वंदे भास्कराचार्य वंदे महाविद्यालय आचार्यों का आशीष सफल विद्यार्थी मन संस्कार सरल जिज्ञासा पूरक अमर ध्यान लौकिक विषयों का परम ज्ञान अंतर चेतन की अमित चाह गतिशील समर्पण का प्रवाह साक्षी अनमोल धरोहर का निर्मल जल ज्ञान सरोवर का नवयुग का पावन अभिनंदन हम करते नित इसका वंदन वंदे भास्कराचार्य वंदे महाविद्यालय और कैमरे का व्यू दिखाइए कैमरे का व्यू चित्रा 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 लाइव नहीं आ रहा कंफर्टेबल इसका है क्या?
अभी मैं क्या बोल रहा हूँ करूँगी कुछ The air we breathe, the water we drink, the trees we love to climb, and even the soil under our feet. All of it is our environment, and everything in the environment is linked with our health in some or the other way. If the air is clean, we breathe easy. If the water is pure, we stay healthy. Happy World Environmental Health Day to one and all present here. The theme of Environmental Health Day is Global Environmental Public Health, standing up to protect everyone's health each and every day. Namaste, good morning and bonjour to all the respected dignitaries, faculties and dear students. It gives me immense pleasure to welcome you all in the green and vibrant campus of Bhaskaracharya College of Applied Sciences. Today we have gathered here to celebrate the rich tapestry of cultural ties which binds both India and France with each other. May I now welcome our today's Chief Guest and Dean of Colleges, Professor Balram Pani Sir, our Guest of Honor, Dr. Daniel Boyri, and Professor Mini Sahana. And our Sir, Professor Ravindra Kumar. Thank you everyone for your presence. Bhaskaracharya College of Applied Sciences, in collaboration with Syama Prasad Mukherjee College and Shivaji College, all under the same esteemed University of Delhi, is hosting a one-day event. In this event, mainly we will be focusing on celebrating Indo-French relations, which will also be generous tribute to the enduring warmth and collaboration characterizing the long-standing friendship between the two nations. It offers a unique opportunity to not only commemorate our shared historical achievements, but also to envision a future marked even by deeper collaboration, as a part of our tradition of welcoming the guest with potted plant. Bhaskaracharya College, en collaboration avec Syama Prasad Mukherjee College et Shivaji College, sous la prestigieuse Université de Delhi, organise un événement d'une journée. À cet événement, nous célébrerons les relations indo-françaises, qui sera aussi un généreux hommage à la chaleur et la collaboration durable, qui caractérise une amitié de longue date entre les deux nations. Il offre une unique occasion, non seulement de commémorer notre histoire commune de réalisation, mais aussi d'envisager un avenir marqué par des collaborations. As a part of tradition of welcoming our guests with a potted plant and a token of gratitude, may I now request Professor Shivani Barwani ma'am to felicitate our today's chief guest, Professor Balram Pani sir. Thank you very much, ma'am. I would now request Dr. Bhavit sir to felicitate our today's guest of honor, Professor Ravindra Kumar, Dean of Cultural Council. Thank you, sir. I would now request Dr. Neeru ma'am to felicitate our today's guest of honor, Professor Mini Sahana.
May I now request Dr. Amandeep ma'am to felicitate Dr. Daniel Boye with the portrait ma'am. Thank you, ma'am. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. He is always ready to accept the challenges and provides the best possible solutions to it. May I now request our principal, Professor Avnish Mittal sir, for the welcome address. A very good morning all of you. सभी को नमस्ते. भास्कराचार्य कॉलेज में आप सबका स्वागत है. मंच पर उपस्थित हमारे अपने प्रोफेसर बालाराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस, प्रिंसिपल भास्कराचार्य कॉलेज, प्रेजेंटली ऑनली एंड ओनली. वी हैव प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, डीन कल्चरल काउंसिल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. वी वर एक्सपेक्टिंग Dr. Lathar also. He is the chairman steering committee, but because of some emergency at his home, he is not able to join us. We are also thankful for Professor Minisa Hani. She is presently the head department of German and Romance Studies, University of Delhi. Dr. Daniel Boye, he is the former president of Culture and Heritage Commission and former member of the National Council of Monaco. He is nominated by the French Embassy to deliver his thoughts to our audience. Bhaskaracharya College of Applied Sciences take this opportunity to welcome each one of you present on the dais. We also have among us Mr. Sunil Chaudhary ji. He is the former member governing body Bhaskaracharya College and the former treasurer governing body, and my dear colleagues from the teaching and non-teaching staff and dear students. I welcome you on this inaugural program for the Indo-France relations, celebrating the G20 presidency of India with the France as the country to be kept in focus, and we are proud that University of Delhi has nominated Bhaskaracharya College as the nodal center for showcasing Indo-France relations. We collaborated with Shyama Prasad Mukherjee College because of the space crunch we have, because we don't have enough space for the culture activities. So we thoughtfully collaborated with Shyama Prasad Mukherjee and Shivaji College, and today's valedictory program is scheduled at Shyama Prasad Mukherjee College. I would request all of you to join in the valedictory program also at 2:30 p.m. in the Shyama Prasad Mukherjee College. Right. Bhaskaracharya College of Applied Sciences applied for this event just because we were lacking in our one of the point in different categories, grading criteria. The public perception is very low as far as Bhaskaracharya College of Applied Sciences was concerned. So we were of the opinion, if we participate in these type of events, people will get to know about the Bhaskaracharya College of Applied Sciences. We are comparatively the youngest college of the University of Delhi, and we were established only in 1995 at Pusa campus with around 250 students. Presently, we are offering 11 science honors courses, and we have around 1500 plus students, those who are pursuing their undergraduation. And we are proud to have NAC A++ accreditation recently announced in July 2023, and we are also at a grading of 22 under the college category under the annual NIRF, Ministry of Education, Government of India. So we are just showcasing our talent. We can hold such type of important events of the University of Delhi. We are not as a far behind among the different campus college. If we compare the NAC accreditation, we are at the 6th position among the University of Delhi, those and the NAC accreditation, and we are presently the second highest position among 1200% colleges funded by the government of NCT Delhi. We are a 100% government of NCT Delhi funded college affiliated with the University of Delhi. So we participated in these type of activities just to give a platform to our students to showcase their talent, because these events are those which can bring their talent, hidden talent among us. So we are only to provide them the platform, and they are exercising their talent and they are nurturing their talent on their own. Like we have so many activities, we have so many
component of organizing these events, and we are organizing these events only and only through the help of our student volunteers. They are the one who have designed these type of backdrops, brochures, everything our students have done. So we are really proud of our students, those who have decorated this auditorium. Each and every organizing aspect, we request our students to come forward, and they are truly contributing in those type of activities. So I once again welcome all the dignitaries, those who are present on the dais, and I'm very much thankful for all of them to spare their valuable times. Thank you so much. Thank you so much, sir. A great leader always thinks on their feet. A great leader always thinks on their feet and take appropriate action. Always proactive and rather than reactive. Appears flexible, confident and courageous. May I now request the man of action and a true leader of 21st century, Professor Balram Bani sir, for the presidential address. Namaskar, good morning to you all. On the dais, Dr. Daniel Borei, Professor Mini Sahani ji, Professor Ravindra Kumar ji, Professor Avnes Mittal ji, the principal of this college, and the eminent personalities and guests, and my dear colleagues and student friends. It is all about, that is, means we are celebrating, that is the G20, we have already celebrated, and for that G20, India held the presidency of that one, and we achieved a lot. And we did, means whatever we have said, we got it. Because of the bright minds of our country, the bright minds like you, they have done all these things. And Delhi University, means whenever it was the G20, means the total 20 countries, it will be distributed among the different colleges of our university. So only 20 colleges, we can 20 countries, so that's why you can assign it to the 20 colleges. And to just imagine, out of 20 colleges, means this is the Bhaskaracharya College, one of them is Gadi. So you are, in that sense, you are clear. As principals have told that the college itself, it has achieved many things in NAC, in NIRF ranking, in all aspects. The college is doing very well. And it is the youngest one, but still you have established as a reputed institute in Delhi University. So that is the beauty of that one, because it is the hard work, dedication and commitment 2 years your work in this college. And G20, that theme, it is the Vasundhaiva Kutumbakam. One earth, one family and one future. Means whenever you will talk about the one earth in that sense, in that is the means mainly you are talking about the environmental science. In environmental means the whole world is talking one. Means whenever you go for the earth, you will have to address the global issues. Means whatever the global issues and global problems, these issues has to be addressed. So that is the one earth, one family. One family means we, all the world, means whatever the countries existing in the world, they will collaborate, they will cooperate with each other. So that just like a family, means you are staying in the family, means if somebody is lagging behind, just we will cooperate with him and uplift him. Similar way, in the whole world, means we are talking about just like a family. If there is any problem in any country, in anywhere else, then we are ready to help them out. This is the culture of our country. So in that sense, we have for that one family and one future. We have one future. What is that? Means all that is Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya. This is our future. Means everybody should prosper and they should develop and they will make the world very beautiful. So this is the
main motto of the G20, and we have achieved that one. Means the whole world they have been get together in Delhi itself. Means you are privileged because you are in Delhi. Those who are in outside Delhi, they are thinking that okay, means we should have present in Delhi at that time. Means that celebration it was taking place, and the parameters we have set in G20, it is tremendous. This is the prestige of our country, and we have done it. We have achieved it, and these are the things. And this college has the collaboration with Sama Prasad Mukherjee College and Shivaji College. We all together we will do. Means that is here. It is assigned that Indo and France. Means how the Indo and France. What is the relationship between the Indo and France? That is the main thing. And France is known as the country of art, and our country is known as the country of the spiritual. So if art and spiritual they go side by side, because there is no difference between the art and spiritual. And spirituality and art means everywhere. Means you will find it out in any fine artist or in the classical artist. You will find it out that our culture is reflected there, our spiritual culture is reflected there. So that's why we, in one way, you can say we have very good relations between France and India. And that's why means our college has been assigned that one. We will have to find it out. Means this is the research field. Means one aspect it is that means you will have to find out what are the culture and the socio-economic, political, means what type of any type of relationship between India and France. You will have to find it out and make a report and submit it, so that in future it will be also helpful to the other body, and it will be preserved in the library, so that we will find it out. Okay, the Bhaskaracharya College has done all these activities and research work about Indo and France relationship. This is the main motto, and you have invited me, and I am very much thankful to you all. And again I say namaskar. Thank you. Thank you, sir. Film Odyssey, the film club of Bhaskaracharya College of Applied Sciences and the University of Delhi, is going to showcase the journey of the college through a short video. I request you all to spare a few minutes to it.
Applied Sciences. Thank you very much. Cheers to 3 incredible decades of college memories. I really feel honored to be the part of this institution. I would now like to request the dignitaries to kindly release the brochure for today's event. Just take a minute. बेटा आप लोग सेटअप कीजिए. हम एक माइक लगा माइक के बारे में माइक का बेटा कहाँ है? शुरू करें. Chhap Tilak Sab Chhini is a ghazal written and composed by Amir Khusro, a 14th century Sufi mystic. Chhap Tilak Sab Chhini is considered as Amir Khusro's most known kalam, which is basically a penned version of his imagination of devotion and joy of oneness with the Eternal One. So with this short introduction to the song, I would like to invite the students of Moksha, the music club of Bhaskaracharya College of Applied Sciences, to showcase their musical talent. Check. 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 Hello.
What a What a melodious performance. Thank you, Team Moksha. The Culture Council of the University of Delhi was established in the year 1989 with the objective to discover, develop, train and promote socio-cultural talents and interests amongst the students as well as the staff of the University of Delhi. May I now request Professor Ravinder Kumar, Dean, Culture Council, to address the audience. इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा असूल है पहले सलाम करता। आवाज़ आ रही है सही आपको? ये सिर्फ एक शेर नहीं है, इसका एक दूसरा पार्ट भी है। वो है मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता। आप सभी को नमस्कार। बहुत ही आदरणीय डेनियल बोरे जी, प्रोफेसर मिनी सानी जी, बलराम पानी जी अभी चले गए हैं और आपके कॉलेज की जान भी हैं, शान भी हैं। और प्रिंसिपल साहब अवनीश मित्तल जी और फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जिसकी तारीफ सबसे ज़्यादा मैंने सुनी है वो आप लोग स्टूडेंट्स ही हैं, इसलिए आप अपने लिए ताली एक बजा लीजिए। इतने कम रिसोर्सेज के साथ इतना अच्छा अरेंजमेंट करना, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और हमारे देश की स्थिति भी आपके हॉल जैसी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, स्पेस कम है, पर फिर भी हम वर्ल्ड मैप पे छाए हुए हैं। और वो लोग जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करते जो रिसोर्सेज का रोना रोते रहते हैं, जो ये कहते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। जितना कुछ है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये भास्कराचार्य कॉलेज से सीखा जा सकता है। दूसरी बात, मैंने जो आपको शेर सुनाया था वो इसलिए भी सुनाया था कि भारत केवल मेहमान नवाजी ही नहीं जानता, दोस्तों के साथ सलूक कैसा करना है वो भी नहीं जानता, दुश्मनों से सीखना भी जानता है और दुश्मनों से संबंध कैसे रखने हैं वो भी जानता है। और ये केवल ज्ञान की भूमि नहीं है, ये कर्म की भूमि भी। महाभारत में एक कहानी आती है, जब भीष्म पितामह तीरों की छाया पर पड़े थे तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा भी आप चलिए मेरे साथ, हम पितामह के चरण स्पर्श करके आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेके आते हैं। तो एक एक पांडव एक एक करके सभी ने पितामह के चरण स्पर्श किए और पितामह ने आशीर्वाद दिया। और सबसे अंत में भगवान कृष्ण ने भी उनके चरण स्पर्श कर दिए। तो पितामह ने कहा, भगवान ये आपने ठीक नहीं किया, आप तो सब जानते हो, आप तो ज्ञानी हो, आपने मेरे चरण स्पर्श क्यों किया? तो भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह मैं ज्ञानी हूं पर आप अनुभवी हैं और ज्ञान को अनुभव के आगे हमेशा झुकना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं,
हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने ज्ञानी हो जाएं, इतना पढ़ लिख जाएं, तो वो टीचर से भी आगे निकल जाएं। पर हमेशा ये याद रखना है, भारत भूमि ने हमेशा याद रखा है कि अनुभव जो है वो हमेशा ज्ञान से बड़ा होता है, और ज्ञानी वही है जो अनुभव के आगे झुके। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं, भारत ने दिल्ली डिक्लेरेशन था जो जब G20 का होस्ट था, उसमें अपने केवल ज्ञान का परिचय नहीं दिया। हमने बहुत सारी अपनी परंपराओं को, चाहे वो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हो, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा हो, या जन भागीदारी की हमारी परंपरा हो, या सबका साथ और सबका विकास हो, इन सब चीज़ों को केवल नारा नहीं बनने दिया, हमने उसको प्रैक्टिकली हम उसको यूज में लेके आए। जो डिप्लोमेसी थी, जो इंटरनेशनल रिलेशन थे, वो G20 के पहले एलीट क्लास का जो विषय माना जाता था। ये माना जाता था भी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जो डिस्कशन होगी, डिप्लोमेसी के बारे में जो डिस्कशन होगी, वो एलीट क्लास में होगी। पर भारत ने G20 का आयोजन इस तरीके से किया कि हम कॉलेजों में, सिटीज के लेवल पे, इवन यूथ 20 के माध्यम, चौपाल के माध्यम तक हम इंटरनेशनल इशू को ले गए हैं। ये हमारी पहली और सबसे बड़ी भारत की मेरा ख्याल अचीवमेंट है, जो हम जनमानस तक जो ग्लोबल इश्यूज हैं या जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, हम उसको यहाँ तक लेके आए हैं। दूसरी बात, अब तक ये बात थी भी हम ग्लोबल को लोकल तक प्रोजेक्ट करते थे। अब हमने उल्टा किया है, हमने लोकल क्या है उसको ग्लोबल को दिखाने की कोशिश की है। हमने अपना हेरिटेज दिखाया है, हमने अपना कल्चर दिखाया है, हमने फूड हमारा है उसको दिखाया है, हमारे डांसेस, हमारी ड्रेसेस, ये सब कुछ तो दिखाई है। जो इस समय UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मना रहा है, और हमने जो व्यंजन परोसे थे जी होस्ट गेस्ट कंट्री को, उनमें उन मिलेट्स का हमने इस्तेमाल किया है। यानी हमने बातों को सिर्फ नारे तक सीमित नहीं रखा, हम उनको प्रैक्टिकली हमने उसको प्रैक्टिकल रूप दिया है। दूसरी बात, जो टेररिज्म है वो लोकल इशू भी है, उसमें जनमानस भी प्रभावित होता है, वो ग्लोबल इशू भी है। हम टेररिज्म को वर्ल्ड के मैप पे एक थ्रेट के तौर पे हमने दुनिया को समझाने में हम काबिल हुए हैं कि टेररिज्म कितना बड़ा इशू है और उसका जो खतरा है पूरी दुनिया को है। उसके अलावा जो ग्रीन एनर्जी है, उसमें जो हमने अपनी कैपेसिटी है वो 2030 तक 3 गुना बढ़ाने की बात कही है। और आपको पता होगा कि जो सोलर एनर्जी है उसका जो 60% है वो अफ्रीकन यूनियन के जो कंट्री हैं उनका इस्तेमाल वो करते हैं, उनको करना आता है। और भारत ने अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके ये दिखा दिया है भी, हम उम्मीद तो ये की जाती थी भी हम सिर्फ अनाउंस करेंगे और अफ्रीकन यूनियन अगले में शामिल होगी, पर भारत ने इसी G20 के आयोजन में अफ्रीकन यूनियन को शामिल भी किया है और दुनिया को बताया है भी सबका साथ, जो सबका विकास है, ये केवल भारत के लेवल पे नहीं है, ये वर्ल्ड के लेवल पे। अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे, रिसोर्सेज को साझा करेंगे, तभी जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का जो हमारा सपना है वो तभी पूरा हो सकेगा। क्लाइमेट चेंज को लेकर हमने जो अपनी जो कमिटमेंट है उसको दोहराया है। फॉसल फ्यूल को हम कैसे फेज आउट करेंगे इसकी बात की है। और ना केवल भारत, सो दुनिया के जो बाकी देश हैं हमने उनको भी ये तैयार किया है भी जो कार्बन का लेवल कम करना है, ये केवल विकसित देशों का मामला नहीं है या विकासशील देशों का मामला नहीं है। अगर एक वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर चाहते हैं तो हम सबको मिलजुल के इस दिशा में काम करना होगा। और
टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया का, 130-40 करोड़ लोग और बहुत सारे लोगों की जेब में मोबाइल, और रेडी वाले के पास जाओ, रिक्शा वाले के पास जाओ, वो कहेगा पेटीएम करोगे या गूगल पे करोगे। ये जो पावर है इंडिया ने वो वर्ल्ड को दिखला दी है, अपनी टेक्नोलॉजी को लोएस्ट लेवल पे कैसे हमने ट्रांसफ़र करना है। अब तक ये था भी टेक्नोलॉजी का जो यूज़ था वो सिर्फ एलीट क्लास के लिए माना जाता था, पर हम उसको जो नीचे के सतर पर ले आए हैं और दुनिया को ये भी बताया है कि रिसोर्सेज सभी के लिए होने चाहिए, टेक्नोलॉजी सभी के लिए होनी चाहिए। और सबसे आखिर में जो बात हमने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है वो है सॉफ्ट पावर का। अब तक हार्ड पावर की बात की जाती थी, कल्चर के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू और भाषा के थ्रू, शब्दों के थ्रू तो है ही, साथ में जो हमारी संस्कृति का प्रदर्शन है वो भी एक पावर होती है। हमने ये भी दुनिया को दिखाया है। किसी शायर ने कहा है, शायद उसको पता नहीं था शायर को भी ये शब्द भारत के बारे में कह रहा है, वो है उम्र भर पिघले हैं लेकिन मिटे नहीं, हस्ती है अपनी मोम में लोहा मिला हुआ। तो भारत ने सचमुच ये परिचय दिया है कि हम मोम भी हैं और हम लोहा भी हैं। भास्कराचार्य कॉलेज को बहुत बधाई। आपके साथ मैंने ये देखा है नेचर आप पे बहुत मेहरबान है। वो इसलिए मेहरबान है, पानी जी आपके डीन कॉलेजेस हैं, तो भास्कराचार्य कॉलेज को सभी जानते हैं। जो कंट्री आपको मिला है वो फ्रांस है, ये आपकी चॉइस नहीं है। फ्रांस क्या है? आर्ट और कल्चर। भारत क्या है? स्पिरिचुअलिटी, कल्चर और आर्ट का संगम। एक छोटी सी कहानी मैं बता के अपनी बात को विराम दूंगा। कहानी सिर्फ इतनी है, जब सेकंड वर्ल्ड वार थी तो जर्मन फौजों ने हमला किया, तो जर्मन के एक जर्नैल थे जो फ्रांस को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे, तबाह करना चाहते थे। फ्रांस को नहीं, पेरिस को, स्पेशली पेरिस को वो ख़त्म करना चाहते थे। उस समय जो पेरिस की कल्चर मिनिस्टर थी वो एक लेडी थी। उसको जब पता चला भी इनकी प्लानिंग ये है, वो उसी रात को उसी जनरल को मिली। उसने जनरल को ये कहा भी आप पेरिस को तबाह कर दोगे, दुनिया हमेशा इस बात के लिए आपको याद रखेगी कि दुनिया के आर्ट को, दुनिया के कल्चर को आप जर्मन ने तबाह किया है, आप लोगों ने तबाह किया है। पर मुझे फ्रांस के लोगों पर पूरा भरोसा है, वो इससे भी अच्छा पेरिस बना लेंगे, वो इससे भी बढ़िया पेरिस बना लेंगे। मैं सिर्फ आपको एक चेतावनी देने आई हूँ भी आप इतिहास में अपना नाम काले अक्षरों से मत लिखवाना, हमें अपने लोगों पर भरोसा है। ये जो समानता है ये भारत और फ्रांस दोनों में है। भारत को हजारों सालों से तहस नहस करने की कोशिश की है, भारत उससे भी बढ़िया होकर, उससे भी उज्जवल होकर, उससे भी विराट होकर सामने आया है। ये बात दोनों ने, दोनों देशों की समानता की है। और अंत में आप सभी को, भास्कराचार्य कॉलेज को, गिल्टी मेंबर्स को, प्रिंसिपल को, स्टूडेंट्स को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। कल्चर काउंसिल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हमेशा आपके साथ है। शुक्रिया। Thank you, sir. I would like to request our dignitaries to kindly release the brochure for this event.
मीनाक्षी अच्छा बहुत सर after the vote is silent. It is never an end. We can take a pause for a moment and get ourselves ready for another beautiful part. I now request the G20 Nodal Officer, Dr. Shivani Birmani ma'am, to deliver the vote of thanks. I'll start with a prayer. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurune Devo सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति बप्पा, आप आज हमारे सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे करें और हमारे आज के समारोह पर अपनी कृपा बनाए रखें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, संपूर्ण मानवता एक परिवार की भांति है और वसुदैव कुटुंबकम। वसुदैव कुटुंबकम का अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। Namaskar, bonjour and good morning. Today marks a significant milestone and it is with deep gratitude that I extend my heartfelt thanks to each and every one of you who has contributed to the success of the event. Professor Balram Pani ji, our patron, your unwavering support has provided us with a strong foundation. Professor Avnish Mittal ji, your trust in our vision has been a source of inspiration for all of us. Your belief in our capabilities has fueled our determination for putting up this grand show. We are honored to have guidance from Anup Lathaji, who could not attend the event due to his engagement. Special mention must be made to Professor Ravinder ji for his consistent mentorship and Deputy Dean Hemant ji for his invaluable contribution which has refined our program. The DU Culture Council financial support and unwavering guidance has been pivotal in bringing this event possible. Thank you, sir. A special note of gratitude to our guest of honor and resource person, Dr. Daniel Borel from Monaco, France, for gracing the occasion and bestowing an international dimension to our event. Professor Mimi Sani ma'am, your warmth and friendliness have touched our hearts. The Department of Germanic and Romance Study, your guidance, especially from Simpi ma'am, you have been invaluable. I am deeply humbled by Professor Sadhana ma'am, Principal SPM, and her dedicated team including Supriya, Shivani, Virendra, Shagun and Anjuman, etc. for their tireless effort which has been the pillar of our support. As an alumna of Shivaji College, it has been a privilege for me to be a part of this cherished partnership between Bhaskaracharya, SPM and Shivaji College. The sense of belonging is deeply ingrained in our hearts. The leadership of Nimita ma'am and our very own Shwetambi ma'am has been invaluable. I am thankful to Professor Virendra sir. I extend my gratitude to both teaching and non-teaching staff of all the colleges involved. Our student leader, Kuntak, Meenakshi, along with their extraordinary team, including Kripansha, Priyank, Nalini and the Countess Endless, have demonstrated exceptional dedication and commitment. Their relentless effort have made this event possible. A heartful of gratitude to my team, Bhagadeep ji, who is the co-convener, Amandeep, co-convener, Neeru ma'am, the organizing secretary, Anil, Manoj, Shikha, Krishna, Anup, Sakshi, Mohit, Swati, to name a few. You were superheroes of the event. Your collective effort and seamless coordination were the driving force behind the success of this venture of ours. Our journey in preparing for this event has been joyous and enriching thanks to all the invaluable guidance from the Culture Council, the seamless collaboration between the two distinguished colleges, SPM and Shivaji with us, and the support of Alliance Francaise, a sister concern organization of French Embassy of India, who has powered Boyri sir's talk. To all those whose name I might have missed out, but was not intentional due to the constraint of time, Anil, Dev, Narendra ji, Rajiv ji, Siddiqui, Suraj, etc. Lastly, I would like to express our gratitude to the Almighty. While we can plan and strive, it is ultimately in His hand that the execution and result lies.
We thank God for showering His blessing upon us, leading us to the successful proceeding of the year. Thank you all once again. Your collective efforts have made this day possible, and your support will forever be etched in our heart. Here's to many more successful endeavors together. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you, ma'am. May I now request Dr. Anil Barak, sir, to felicitate Professor Sadhna Sharma, ma'am, Principal, Shyama Prasad Mukherjee College, with a potted plant. Thank you, sir. When we talk about patriotism and power, India and France are on the same page, one being in Asia and other in Europe. Quand on parle de patriotisme et le pouvoir, l'Inde et la France sont sur le même longueur d'onde, l'une est en Asie et l'autre en Europe. French heritage and relation with India have a rich and multifaceted history, with influences and ideas spreading to India through various channels over the century. The legacy of French colonial architecture, street name, and culinary tradition can still be seen in Pondicherry and its surroundings. L'héritage français et les relations avec l'Inde sont riches et une histoire aux multiples facettes, avec des influences et des idées qui se propagent en Inde par diverses chaînes au fil des siècles. L'héritage de France, l'architecture coloniale, les noms de Dieu et les traditions culinaires peuvent encore avoir à Pondichéry et ses environs. French education institutions and universities have played a crucial role in spreading French ideas to India. And since Indian scholars have also been visiting France, it contributed to the exchange of ideas between the two nations. Les établissements d'enseignement et les universités françaises ont joué un rôle crucial dans la diffusion des idées françaises en Inde. Et, depuis les savants indiens ont également visité la France, cela contribue aux échanges d'idées entre les deux nations. Cultural exchange between France and India have been facilitated through art exhibition, music festivals, dance performance, and culinary events. Des échanges culturels entre la France et l'Inde ont lieu à travers des expositions d'art, des festivals de musique, des spectacles de danse et événements culinaires. Diplomatic ties and collaboration between France and India have strengthened over the years and facilitated the exchange of ideas and expertise in areas such as science, technology, and environmental conservation. Les liens diplomatiques et les collaborations entre la France et l'Inde ont renforcé au fil des années et facilité l'échange d'idées et une expertise dans des domaines comme la science, la technologie et conservation de l'environnement. With this brief note recalling the history, tradition, and relation of India and France, I would like to introduce our today's guest of honor, Dr. Daniel Boré. He belongs to Monaco, France. Avec cette brève note rappelant l'histoire, les traditions et les relations de l'Inde et la France, j'aimerais vous présenter notre personne ressource d'aujourd'hui, M. Daniel Boré. Il appartient à Monaco, en France. Dr. Daniel Boré is a sociologist and a politician. He was former member of the National Council of Monaco from 2013 to 2023. He was former president of Culture and Heritage Commission. He is the creator of the Art Gallery. M. Daniel Boré est un sociologue et un politicien. Il était ancien membre du Conseil national de Monaco. Il a été président de la Commission de culture et du patrimoine. Il est créateur de la Galerie d'art L'Entrepôt de 2009.
He began his career as an organizational development consultant several decades ago, primarily for multinational companies. He is founder of Bore Consultants, 1975. Il a débuté sa carrière comme consultant en développement organisationnel il y a plusieurs décennies, principalement pour les sociétés multinationales. Il est fondateur de Boeri Consultants, 1975. He is a person not only having keen interest in contemporary but also in economics, generating and offering unique space open to creation, new talent, and artists by encouraging art of all mediums in the gallery while developing a strong interaction with the public. Today, he will deliver his talk on the topic Geopolitics, Environment, and the New Economy. Will the world survive? Il est une personne qui s'intéresse non seulement au mouvement contemporain, mais aussi à l'économie, générer et offrir un espace unique ouvert à la création, aux nouveaux talents et artistes, par encourager l'art de tous les médiums dans la galerie, tout en développant une forte interaction avec le public. Aujourd'hui, il prononcera sa conférence sur le thème Géopolitique, Environnement et la nouvelle économie. Le monde survivra-t-il? कौन सी फाइल थी कौन सी फाइल थी कौन सी थी That's I think it's in a good PC. Yeah, and then the downloads. Yeah, the first one. Yeah, and then we'll go for full page, full screen. Yeah. Yeah, that's good. Full screen. Perfect. Non, non, c'est moi qui vais changer. C'est toi qui as pris? Oui, c'est moi qui ai changé. Light up. You send me? Good morning. Good morning. Formidable. Vous avez bénéficié d'un petit entracte technique. Vous bénéficiez d'un... Je voudrais remercier d'abord le professeur Mittal pour m'avoir invité et le conseil d'administration du collège, mais aussi l'Alliance française qui m'a fait venir à New Delhi,
donc avec Stéphane Amalire. Je voudrais aussi profiter pour remercier l'éditeur de Chamark qui a en quelques jours publié mon livre en anglais, et évidemment Mashima qui va faire son mieux pour me comprendre avec mon accent français un peu bizarre. On n'est pas de Monaco par hasard. Je vais we all got a break because of a small technical problems we had sometime. First of all, I'd like to thank Professor Mittal for inviting me here and the governing body of the college. And I'd also like to thank Alliance Française. They invited me to come to Delhi, and Stéphane, who is the director of Alliance Française. And I would also like to thank the publisher who managed to publish this book in a few days in English. Et donc je suis fier de participer à cette séance inaugurale des relations franco-indiennes ou indiennes-françaises à l'occasion du G20, et je suis très content d'y participer. So I'm very happy and proud to participate in this event which celebrates Indo-French relationships in the context of G20. Et puis, je vais aussi vous dire une deuxième raison pour laquelle je suis très heureux, c'est que quand j'étais plus jeune, j'ai été aussi pendant 10 ans professeur à l'Europe Business School de Paris et à l'université Paris-Dauphine. And the other reason why I'm very happy to be here is because when I was much younger, I was also professor at the Paris-Dauphine University and the European Business University. Alors pour commencer, je voudrais poser juste un point. Il y a eu le G20 au mois de septembre et il y a eu aussi le 28 juillet à Madras une réunion du G20 qui a posé les questions telles qu'elles sont. Le G20, c'est 80% du PIB mondial et c'est 80% de la production de CO2 mondiale. So, one point that I would like to start with is the G20 summit was held in September in India, and there was another one before that on 28th July in Madras. And the main question was asked that it represents 80% of the carbon production of the countries in Java represent 80% of CO2 emissions in the world. Donc, je vais vous parler j'avais prévu 4 sujets, mais je crois qu'on restera à 2 sujets. D'un côté, le climat qui change et aussi la technologie, qui sont les 2 grandes mutations. Si vous voulez me poser des questions ensuite sur le BRICS, le changement Indo-Pacifique versus Occident, ou encore la démographie, on le fera, mais je pense qu'on va se concentrer sur les 2 premiers sujets. So I had chosen 4 topics, but I think now I'll stick to 2. One is climate change, and the second one is technology, and the 2 mutations that we've seen in technology. Later on, if you want to ask me questions on BRICS or on the other 2 topics, you can. Nous avons donc un objectif de réduire la production de CO2 de 45% d'ici 2030. So the objective we have is by 2030 we to reduce CO2 emissions by 45%. Et j'ai été très content de me promener en ville et de retrouver le slogan, donc One Earth, One Family, One Future.
Simplement, je ne voudrais pas être pessimiste, car nous avons déjà vécu ça, pour d'autres sujets. Le premier, 60 ans avant Jésus-Christ, avec la fameuse expression de Cicéron, Catilina est aux portes de Rome et on délibère. So, I'll just briefly say what he said before that. The slides are there in English. So, he just said I was very happy walking around in Delhi and I discovered this slogan, One Earth, One Family, One Future. And I wouldn't want to be pessimist, but these are the three historical events that I thought of when I saw this. En 1789, la Révolution française, le politicien Mirabeau appelle le roi et lui dit aussi Catilina est aux portes de Rome et on délibère, alors qu'il y a la Révolution en marche. Pas besoin de traduire, c'est la même chose. Ensuite, c'est en 2002, au sommet de Johannesburg de la Terre, le président français Jacques Chirac, Our house is burning and we are looking other way. Et il rajoute, nous ne pouvons pas dire que nous ne le savions pas. So, and I think the third one that the French president said, house is burning and we're looking the other way, and he said, and he added that we cannot say that we didn't know this would happen. Alors, le résultat de la situation d'aujourd'hui, c'est que nous vivons à crédit sur la planète. Au 31 décembre 1986, la Terre consommait la production naturelle de la planète. C'est bon ? En 23, l'équilibre arrive le 2 août, c'est-à-dire que on vit à crédit sur le dos de la planète depuis 151 jours. On mange plus que la planète nous produit. Nous sommes en grand déséquilibre. Et si nous ne faisons pas un effort considérable pour y arriver, nous n'y arriverons pas. Alors, un exemple qui soutient ce que je viens de dire, c'est qu'il faut 2 planètes pour nourrir la planète. Et alors, je me suis amusé de donner des exemples. Il faut 2,4 Indes pour nourrir l'Inde. Il faut 3 France pour faire vivre la France. 3,9 Chine, 4,3 Suisse, 4,3 Italie et 7,1 Japon. On voit bien qu'il y a des déséquilibres fondamentaux, permanents et de tous les jours. So, as you can see on the slides, this is a very fundamental ecological balance of this. Et donc, je voudrais vous montrer un premier transparent sur la hausse de la température. Et c'est pas la peine de la commenter vraiment, mais en revanche, je vais vous raconter une anecdote que j'écris dans mon prochain livre. I'll just narrate an anecdote that I'm going to put right in a new book. Nous avions l'habitude, pour les périodes de septembre-octobre, de dire en France et un peu en Europe, nous vivons l'été indien. Ça veut dire que c'était une période de douceur, de continuation de l'été, mais avec atténuation. Et là, il n'y a plus d'été indien. C'est la canicule. So many years ago in France, in Europe, for September, October, we used to welcome it, we used to be happy, and we used to call it the Indian summer. That it wasn't very hot, it wasn't cold, and we used to enjoy that period. But not so anymore. Now this period is known for heat waves in Europe.
sur le transparent suivant, vous allez voir les risques de survenue des crises climatiques en fonction des pays. Et là, vous voyez, la plus importante, c'est 10 fois plus de risques au Texas. Vous les voyez dans tous les pays. Les États-Unis, 4 fois. L'Europe, 4 fois. La Russie, 3 fois. La Corée, 10 fois. Et je voudrais juste raconter ce qui s'est passé cet été. Bon, avec le Canada, mais le Canada a brûlé. Et par comparaison, on a dit que c'était l'équivalent de la Grèce. Et la Grèce a brûlé aussi. Et on a dit que c'était l'équivalent de New York. And the same thing happened in Greece, and the area covered is equivalent to New York. Et puis, les eaux montent. And rising sea levels. Les eaux montent parce que les glaciers ont perdu, depuis 1970, 28 cm d'épaisseur. L'eau monte de 3 mm par an, les océans montent de 3 mm par an, et c'est le paradoxe. D'un côté, on a la sécheresse, et de l'autre côté, les eaux qui montent. So the sea levels are rising 3 mm every year, and that's the paradox that we have drought in some places and rising sea levels. On considère que si rien n'est fait, 215 000 glaciers vont perdre entre 20 et 40% de leur épaisseur. C'est vraiment un truc extraordinaire. If nothing is done, then about 215,000 glaciers will lose up to 20 to 40% of their mass. Et je vous donne maintenant l'exemple en Gironde de la France, dans l'ouest de la France, donc en Gironde, l'immeuble qui fait symbole, le Signal. Il était en 1967 à 200 mètres de l'eau. Et tout le monde s'est précipité pour acheter des appartements dans l'immeuble. So, as you can see in south of, in west of France, this building, this Signal, came up in 1967, and people hurried to buy apartments over there. And at that time, it was 200 meters away from the coastline. En 2014, c'était 9 mètres tout près. In 2014, it was 9 meters away from the coastline. Et en 2023, on détruit l'immeuble. Et c'est quelque chose d'important pour la France. Le Nord est particulièrement en danger, sans changement, parce que l'eau peut monter encore de 60 à 80 cm en moyenne. La ville de Calais serait totalement absorbée. Donc c'est vraiment au-delà des mots, c'est des risques vraiment que l'on vit de plus en plus. Et c'est une alerte. And the north of France is particularly in danger because the sea level is rising 60 to 80 centimeters. And if that continues and nothing is done, then the city of Calais will be completely submerged. And so it's beyond words, it's a real danger. Et maintenant, on a aussi le test hydrique, le stress hydrique, la pénurie d'eau potable. Comme vous le voyez, 2,5 milliards de personnes sont en danger pour avoir de l'eau potable. Je rappelle que pour un humain, au minimum, pour qu'il puisse vivre avec l'eau potable, il faut 1700 mètres cubes d'eau par an. For a human being to be able to live properly, needs about 1,700 metric cubes of water. Sans changement, on estime qu'en 2040, quand on dit on estime, c'est les experts, 33 pays
seront en stress hydrique. In 2040, about 33 countries would be suffering hydric stress. D'autant plus que on attaque les océans et que les océans sont un capteur de CO2. L'océan est capteur de CO2 et petit à petit, l'océan se dégrade. Donc on a une machine infernale qu'on est en train de mettre en place. And especially if we see oceans are the big absorbers of CO2 emissions, and they are undergoing a lot of degradation. And that is really. Alors donc, évidemment, je ne vais pas vous donner toutes les solutions, ça serait trop simple et vous ne me croirez pas. So I don't want to give you all the solutions. It would be too simple and you wouldn't believe me. Mais la priorité doit être de réduire les industries fossiles. C'est quelque chose d'extrêmement important. But the priority should be to reduce our consumption of fossil fuels. On doit travailler sur les énergies renouvelables. We should work with renewable energy resources. Notamment la production d'hydrogène vert. Green hydrogen. Et je voudrais juste une petite anecdote, mais une vraie, parce que ça vient de sortir. La Chine a 460 projets de production d'hydrogène vert ou jaune. Nous faisons du travail sur la fabrication de l'hydrogène, mais nous le faisons en manière thermique, à l'ancienne, ce qui fait qu'on produit de l'énergie, de l'hydrogène gris et non pas vert et jaune. Et pour ça, la Chine a inventé de faire donc un travail d'électrolyse pour séparer l'eau et l'oxygène. Et il arrive à avoir du vert et du jaune. So I'd like to tell you here that China has about 460 projects to generate green and yellow hydrogen. So we've been producing hydrogen, but we use the thermal process, and that is gray hydrogen. And so they have used the process of electrolysis to separate this and to get green and yellow hydrogen. Il y a donc une véritable urgence climatique dont nous sommes tous concernés, et c'est très dur parce qu'il faut changer le mode de vie des populations. Il faut effectivement être contraignant. Ce qui était vrai n'est plus vrai. Et c'est pas parce que les gens sont bons ou mauvais, c'est parce que c'est la nature qui le demande. Mais surtout, je voudrais juste rajouter un point. La France a pour objectif d'investir plus de 60 milliards d'euros. Il faut multiplier au moins par 100 pour les INRI, mais bon, vous trouverez, jusqu'en 2030 pour atteindre son objectif de réduction de CO2. Probablement, ça c'est la théorie, et qu'en pratique, ça sera difficile à atteindre. Mais, admettons que ce soit réussi. La France, je rajoute, et Monaco dedans, pèse 1% de la production de CO2. Donc, il ne suffit pas que chacun travaille dans son coin, il y a besoin d'une... Et c'est pour ça que le G20 sur le climat est essentiel, il y a besoin d'une politique internationale commune, quelles que soient les difficultés politiques ou économiques et sociales, il y a besoin qu'on travaille tous ensemble, sinon on ne pourra pas aider les pays qui de toute façon sont obligés de consommer des énergies fossiles, et même ceux qui pourraient s'en sortir n'ont pas forcément les moyens. Donc je crois que c'est un peu la conclusion, nous sommes tous concernés. So there is an urgent need to work for climate. We need to, the main thing is to change our lifestyle. It is simply what was right before is not right anymore. It's not that people are good or bad, but
It's just that what we did doesn't work anymore. We need to change. And just to give you an example, France is planning to spend 60 billion euros to reduce its carbon emissions by the year 2030. It is a tall task, but even if they succeed in doing it, it is to be noted that France, Monaco included, represents only 1% of carbon emissions in the world. So it's the work is enormous, and there has to be the G20 on climate, and we should all come together, work together, and there has to be a common international policy for climate. So c'est une solidarité mondiale absolue. Si on travaille chacun dans notre coin, même si on fait bien, on n'en sortira pas. Je crois que c'est vraiment le constat que j'ai fait. If we all continue to work each in our own corner, it will just not work. To be able to get out of this situation, we need to come together and work together. Comme le temps passe, je voudrais vous dire quelques mots maintenant sur la technologie. So as we short Je of change time, de I'll say sujet. a few words on technology. La technologie aussi change toutes les pratiques. Toutes les pratiques, et personne ne le savait. Avec la Covid-19, les gens sont restés à la maison et ont découvert une autre manière de travailler. Alors, le télétravail, évidemment, mais surtout, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est que le travail à distance, il peut être fait partout dans le monde. C'est pas simplement, oh, on vient pas travailler le matin. Oui, c'est comme ça, mais c'est aussi, et on le voit, les entreprises en France ont de plus en plus de mal à recruter parce que les gens disent d'abord, est-ce que je travaille 4 jours par semaine? Est-ce que je travaille en télétravail à la maison? So as you can see, technology has changed our lifestyle also. During COVID, people started working from home, and now we can see the phenomenon everywhere. Even in France now, people are recruited. So always the question is always there, can I come only a few days, can I do work from home? Ça veut dire que dans le travail, au-delà des tâches elles-mêmes, on a pu voir un objectif, donner un sens au travail à la maison. Et je donne cet exemple qu'on a donné assez souvent en France, où un père de famille a dit « Je me suis occupé de ma famille toute la journée et j'ai commencé à travailler à 10 heures du soir. » So, about the tasks that are to be accomplished, it is also now to give a meaning to the work being done at home. So, for example, one father of a family said that I took care of my family the whole day, and now 6 o'clock in the evening I'm going to start work. C'est un point extrêmement important. Ensuite, vous avez les noms, la téléplateforme, le quick and collect. Les gens commencent à acheter par Internet, c'est clair. Mais il y a plus. Il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'on est des robots ou pas? L'intelligence artificielle donne un plus extraordinaire, à condition bien sûr qu'on travaille avec intelligence dessus. Néanmoins, en France, la semaine dernière, une entreprise de 400 personnes, dont le métier, c'était, on travaille pour la presse, des exemples et des articles pour la presse, ils n'ont plus qu'à les remettre un peu en forme, mais on leur fait les articles. Ils coupent 50% les emplois. Ils coupent les emplois de 50%. C'est tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais hier, en Californie, pour la première fois, les pompiers travaillent avec ChatGPT et ils contrôlent les images, et si
les images qu'ils voient sont quelque peu différentes de ce qu'ils ont l'habitude de voir, ils envoient les pompiers pour éviter un incendie. On anticipe le travail. Et c'est quelque chose quand même d'assez formidable. Et donc, cela dit, il y a une étude mondiale qui dit qu'il y aurait 300 000 emplois en jeu. Donc il faut quand même être prudent dans la démarche, mais c'est quand même quelque chose de formidable qu'on doit appliquer. Alors, moi je donne mon cas, quand j'écris un livre, je suis à mon bureau qui est pas tout à fait avec l'ordinateur, parce que j'écris à la main, et puis j'ai besoin d'une question. Je vais sur mon ordinateur, j'appelle ChatGPT, et je vais vous donner l'exemple, il s'est passé la semaine dernière. Quelle est la population mondiale? Et on commence à me raconter la naissance de la population, dans l'Inde, dans tout le monde. Non, je dis, c'est pas ça. Je veux la démographie. Ah, monsieur, je vous avais pas compris. Et il me donne la démographie, les âges, en fonction donc des pays. Et je lui dis, mais c'est pas possible. Vous en oubliez un, vous oubliez Monaco. Ah, et il me répond, c'est vrai, excusez-nous, on a oublié Monaco, et il me donne Monaco. Et ça, j'ai mis plus de temps à aller à mon ordinateur que lui de me répondre. C'était une chose quand même extraordinaire, mais j'en reviens un tout petit peu à mon métier d'enseignant. Si on veut que ça marche bien, c'est apprendre à apprendre. Et pas simplement faire des tâches. Apprendre à apprendre. Just to give you an example, in France last week, a company of about 400 people, journalists, were working for press. They used ChatGPT to generate articles, and they saw that it could cut down 50% of the workforce. In California, this just happened recently, I don't know if you saw. So firemen are using ChatGPT to they are looking at the security images, and if there is even a little change, they can immediately send firemen to control to put out the fire. So they are just watching this and they are taking the help from ChatGPT to watch out for fires and to take immediate action. So I write, by writing my book, actually I don't use a computer, I write by hand. So sometimes I have questions, I need information, and my computer is in another room. So I go to my computer, I went to my computer and asked ChatGPT about population. So started giving me all kinds of data about how the birth, different countries and everything. So I said, no, this is not what I want demography. So they gave me the demographics immediately of all the countries. Then I looked at it and I said, oh, Monaco is not there. So immediately it gave me Monaco. So actually it took me more time to go to my computer and less time to get all this information from ChatGPT. Voilà, pour respecter mon temps, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre? Et sinon, écoutez, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté et surtout de m'avoir invité dans ce début de colloque, d'inauguration. Ça m'a fait vraiment très très plaisir. So thank you very much. Since we are running short of time, I would like to stop here. But if you have any questions, please welcome to ask. But let me thank you for inviting me here for this inaugural session. It is a great pleasure and honor. Thank you very much, sir, for this informative talk on the occasion of World Environment Health Day. We got to know so many things about the grave concerns of global warming and climate change and how technology affects our lifestyle. This will help us all in giving these solutions so together we can help it. And as per the theme of this year's World Environment Health Day also says, Global Environmental Public Health, standing up to protect everyone, help each and every day.
Merci beaucoup pour cette conférence informative à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Nous avons appris tellement de nouvelles choses sur le réchauffement climatique, le changement climatique et la façon dont la technologie affecte notre mode de vie. Cela nous aidera tous à trouver la solution. Ensemble, nous pouvons. Comme le thème de la Journée mondiale de la santé de l'environnement cette année dit également l'environnement mondial, la santé publique, se lève pour protéger tout le monde, songer au quotidien. Merci encore, monsieur. Annie Ernaux, the first French woman to win the Nobel Prize in Literature. Her work exposes, without sentimentality or sensationalism, acute social inequality in France, especially as it affects women and the working class people. Today with us, Professor Mini Sahani, HOD, Department of Germanic and Romance Studies. A guest of honor is going to deliver her talk on the topic, the importance of Annie Ernaux and her novels. Due to the shortage of time, Mini ma'am would be keeping it short. Yes, due to the fact that I have to keep it short, maybe I won't be able to do justice to the theme, but bear with me. Respected Professor Avnish Mittal, respected Professor Sadhna Sharma of SP Mukherjee College, Dr. Danielle Bori, and the other names which I have, Dr. Shivani, Dr. Amandeep Kaur. Thank you for inviting me to the event and for giving me the opportunity to speak about the French Nobel Prize winner. As some of you might know, she was invited by our department, she was invited by the French Embassy, and the French Embassy chose Delhi University for her to visit amongst the universities of Delhi because we teach French on a larger scale, I imagine. That must have been the reason. Because otherwise there's JNU as well, there's Jamia, but they chose the University of Delhi. And for us it was a great source of pride because, I personally have never talked to a Nobel Prize winner. Maybe you all have. So I just want to, encourage you all to read some of her work because I think it's very relevant for India. At least when I read her books, I felt a tremendous sense of identification. Now, when I first how I happened on her was much before she got the Nobel Prize because I was looking for certain authors who do autobiography and fiction together, right? And that's what her work is about. Now, her main source of inspiration is another French sociologist, Pierre Bourdieu, who wrote a book called Distinction. He wrote many others as well. Now, his main premise is that education is absolutely necessary in order to understand even all cultural products. Like sometimes we think that, films and books are heavily subsidized, so they're the reach of the masses. But the point is, if the masses don't have the ability to understand a film and the differences between different classes, that's what he brought about. Now, so this is what she was saying. Now, Annie Ernaux was born in 1940, just after the outbreak of the Second World War in 1939. She was 82 years old when she came here. And a source of inspiration even then because extremely sprightly, crossing continents, etc. It's no mean feat. Now, her grandfather had been a labourer and was barely educated. In her work, A Man's Place, she details the lives of her parents and grandparents. When she passed her teacher training exam, she writes that she would have to explain how as she rose in the education ladder, a distance came between herself and her father, a fractured love. And I will just quote you 3 or 4 lines from her book. She says, "They lived in a small house with beaten earth floors and a thatched roof. All you needed to do before sweeping the floor was sprinkle it with water. The children always had worms. To get rid of them, a small pouch filled with garlic was sewn into the inside of their shirts near their navel. In winter, their ears were stuffed with cotton wool. When I read Proust, I cannot believe that they are writing about the time when my father was a child. In his case, it was more like the Middle Ages. My father missed class when he had to harvest the apples and hay into sheaves and sow and reap whatever was in season. When he and his elder brother went back into school, the master would yell,
So your parents want you to remain as ignorant as they are. He managed to learn how to read and write properly. He liked learning. Then she goes on to describe the lavatories when she was a young girl. The lavatories, she says, were built above the river, in the courtyard behind the house. The excrements mixed with paper borne away by the gently lapping water. Now, in her work, she doesn't use literary artificialities like metaphors, etc., because she says she would not be doing justice to her grandparents' lives if she wrote in colorful language. Her prose is direct, it's raw. Now, the title of my talk today was The Importance of Annie Ernaux, and I will speak about the resonance of her writing with me. And she admits, of course, that fiction is inevitable in her evocation, and she finds no joy in the memories that she's evoked. She says also very touching sentences. She says that her mother spent her life selling bread and potatoes so that she could sit in a lecture hall and read Plato. And still she calls herself a class defector. Now, her main point, there's another book which is written called The Years. Now, The Years talks about also the young people today, which I think is very relevant. She says it's impossible to talk to 30-year-olds today unless it is about computers and mobiles. They have no idea. She said they have no one wants to talk about their ancestors. No one wants to talk about the occupation of France. She says all they drink is Coke and beer. She says purposely when there's a get-together with her 2 sons she's got, so she said with their partners, she purposely serves only French wine, because the point is that this is the heritage of France. She said they have no idea of their history. So I found that very relevant. Now, we usually, or the other quotations which I had given earlier about the poverty of France, we also in India, we have a very hazy picture of French history. I mean, I also didn't know these facts, how poor France was. Yeah, and also I thought that, the US had given Marshall aid to the rest of Europe, so France benefited from that, so prosperous, and so, but the point what she's also trying to make is that, that only in this way, through these efforts, did France become what it was. Now, she says teachers are no better. She's a teacher herself. She says teachers assign topics to students like, does the possession of material goods lead to happiness? And she said, yet teachers also go and buy the latest stereo system, latest, for them, she said, for an older generation, upgradation means that you are not aging. If you have the latest iPhone, that means you yourself are also very young, right? That you are keeping with the times. So, this is what in a nutshell what I had to say. Now, there was once a film called Gangs of New York, and there was a very touching song in that which said, these are the hands that built America, right? Now, Annie Ernaux also says that the kind of memories that she has revived for us through the lives of her parents, she gives us an idea of the hands that built France. Yeah, this is what I want to share with you, and I really would encourage you to read her novels. You'll never regret it. They're all now very cheaply available in Delhi's bookshops. Thank you. Thank you, ma'am. I would now request Professor Sadhana Sharma, ma'am, to kindly pass on the concluding remarks. थैंक यू वेरी मच। यहाँ जो हमारे गेस्ट हैं उन सबको भी मेरी तरफ से नमस्ते। हमारे फ्रेंच प्रोफेसर के लिए बॉन्जूर और आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख़ास तौर पर प्रिंसिपल प्रोफेसर अवनीश मित्तल जी के लिए जिन्होंने कॉलेज में आने के लिए मुझे इनवाइट किया, और आपकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन अभी जो हमारे 2 स्पीकर्स ने दी है, जो पहली इन्फॉर्मेशन थी वो जियो पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट एंड न्यू इकोनॉमिक जो हमारा ऑर्डर है उसके बारे में वो बात कर रहे थे। और आप सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊं कि भारत का मोस्ट फ्रेंडली कंट्री इज़ फ्रांस। सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती हमारी फ्रांस के साथ ही है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो, एजुकेशन हो,
और जितने जो भी हमारे इस तरीके के फाइनेंशियल जो हमारे आपस में एक्सचेंज हैं वो हमारा फ्रांस के साथ बहुत अच्छा है। और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि इस बार उन लोगों के नेशनल डे पर हमारे प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट थे। फ्रांस का जो नेशनल डे था उस पर स्वयं मोदी जी वहाँ पर गए थे एज चीफ गेस्ट। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है, सम्मान की बात है कि जिनको हम डेवलप्ड कंट्री कहते थे वहाँ हमारे प्रधानमंत्री उनके नेशनल डे पर चीफ गेस्ट बने। ये सारा रीज़न यही है कि जियो पॉलिटिक्स ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को आज बदल दिया। मैं बहुत ब्रीफ में ही बोलूँगी इस बात पर कि पूरे जियो पॉलिटिक्स को बदल दिया है। और इसीलिए G20 के अंदर जो वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई थी, जो कि हमारा जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था जिसमें पंचशील की बात करते थे, तो पंचशील का जो सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा था वो था वसुधैव कुटुंबकम। और जब हम एक वन वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम उनकी सारी इश्यूज को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। जियो पॉलिटिक्स में खास तौर पर जो अभी आप लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारा ट्रेड है, उन सब के लिए वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने जो उनके हित हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं। G20 में हम लोगों ने भी जो बात की और हमने जितने फोरम पर भी हमारे देश ने आज बात की है, अब हम नॉन अलाइंड से आगे बढ़कर और देशों के साथ बहुत ही हार्डली जो है प्रेस करते हैं इस बात के लिए कि हम सबके साथ रिलेशनशिप भी रखें, चाहे फाइनेंशियल टाइज हैं, चाहे एजुकेशनल टाइज हैं, चाहे कल्चरल टाइज हैं, वो सब हम लोग रखना चाहते हैं। ये जियो पॉलिटिक्स एक्चुअली उसका ही अंदर आता है। और इसीलिए जो हमने सबसे बड़ी बात कही कि वो टेररिज्म जो है वो आज तक इशू नहीं था, हमारा देश उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था और हमारे नेबरिंग कंट्रीज थे वो लोग कहीं कहीं कभी कभी हमको प्रोवोक भी करते थे, लेकिन आज हमने ये बात को पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया है। दिस इज एन एस्टेब्लिश फैक्ट कि इंडिया की प्रोग्रेस के अंदर, इंडिया की पीसफुल पॉलिसी के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी चीज़ जो बाधा बनती है, हिंडरेंस बनती है, वो क्या है? वो टेररिज्म है। बीच बीच में वो हमारी सारी चीज़ों को थोड़ा सा अपसेट करता है और वो हमारी आज की जो भारत सरकार है उसने एकदम फाइनली उसको जो है इशू मुद्दा बनाकर पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। क्योंकि जब उनके यहाँ होता है तो उन्हें लगता है कि ये इशू है और जब हमारे यहाँ होता है तो लोगों को नहीं लगता कि ये इशू है, लेकिन आज ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। इसी तरीके से आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि ये बिल क्यों आया कि फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड कम टू आवर कंट्री। ये भी इसीलिए आया है क्योंकि हम ही लोग वहाँ जाके पढ़ते थे, तो देश की जो पैसा है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो सारा का सारा वहाँ पर जाता था। अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आएंगी तो हम लोग, हमारे बच्चे यहीं पर ही वहाँ का जो सिलेबस है, जो भी कुछ है, वो आप लोग यहाँ पर भी पढ़ सकेंगे। और इसका एक फ़ायदा और भी होगा कि जो डिग्री यहाँ लेते हैं, जो डिग्री वहाँ लेते हैं और उनको जो रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, वो रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम भी जो है किसी हद तक सॉल्व हो जाएगी। एक और जो बात मैं कह रही हूँ, सर ने अभी बहुत अच्छी बात कही, एनवायरनमेंट के ऊपर जो बात कही है और हमारे देश के लिए इसके साथ साथ एनवायरनमेंट में ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे फूड स्कार्सिटी भी पैदा हो रही है और फूड की प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी लोगों को आने वाली है। हमारे देश में तो अभी भी कम है, लेकिन अमेरिका में और जो इस तरीके के डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर कुछ कमी जो है इस तरीके की आ रही है और यही कारण है। दूसरा, माइग्रेशन भी जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लड़ाई है, अब यूक्रेन में भी वॉर हो रहा है, इस तरीके की जो पॉलिसियाँ उन्होंने माइग्रेशन को जो बढ़ावा दिया उसकी भी इश्यूज जो है जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो है हम लोग देखते हैं। एनवायरनमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, आप सब लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैं 1.5 घंटा लेट पहुंची हूँ और अगर मैंने उसका इस्तेमाल ना करके अपनी ह्यूमन उसका इस्तेमाल किया होता नॉलेज का, तो शायद मैं 50 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाती। एनीवे, हम लोगों को उसको जुडिशियसली इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो भी बताया कि जॉब की प्रॉब्लम्स, कितनी जगह पर जॉब की इश्यूज हुए और लोगों को हटा दिया गया। बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं और खास तौर पे आप जो ये चैट जीपीटी की बात कर रही हैं उसके तो अगेंस्ट भी व्यू जो है एक बनने लगा है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात हो रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ऑलवेज बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई होप सो। और
इसीलिए वो ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है, मैं चाहती हूँ कि वो उसको रिप्लेस कभी ना कर पाए। क्योंकि हमारा जो यंग ब्लड है और जिसको अब आगे अपना भविष्य चुनना है, उनके लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर दें कि वो ह्यूमन को रिप्लेस कर ले। ये मैं अपनी तरफ से भी कह रही हूँ, और मुझे लगता है कि अगर हमारे साइंटिस्ट ने GPT और इन सब के ऊपर बात करना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब यही है। तो हमारे को ज़्यादा बात नहीं कहूँगी इस पर। अभी मैडम ने जो हमको एक बुक के बारे में बताया, क्योंकि मैंने भी उसको नहीं पढ़ा है, तो अभी मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जो बात उन्होंने कही कि इन हाथों ने फ्रांस को बनाया है, जो हमारे पुराने लोग हैं जिन्होंने हमारे देशों को बनाया है, मेरे ख्याल से उसके अंदर जो मेन उसकी थीम होगी, पता नहीं मैडम, मैं पढ़ूंगी उसको तभी मैं ज़्यादा बता पाऊंगी, लेकिन जितना मैंने अभी आपको सुना उससे मुझे ये लगा कि जिन हाथों ने किसी भी देश को बनाया है, उन हाथों की इम्पोर्टेंस हमको नहीं भूलनी चाहिए। तो इसीलिए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने कहा पंचशील, और हमारे अभी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हमें दोनों को ही साथ लेकर चलना है, और अपने मित्रों के साथ। आज हमारा बेस्ट फ्रेंड है फ्रांस। हम समझते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर भारत के साथ और भी सारे देशों की बहुत अच्छी दोस्ती होगी, और G20 का जो ये हमने G20 जो हुआ है प्रेसिडेंसी हमने की, और उसमें जिस तरीके की भी बातचीत हुई, वो भारत को एक नया स्थान, एक नई जगह दिलाएगा, और भारत एक नई शक्ति के रूप में उठेगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am, for such a lovely speech. I would like to take a few more minutes. I would like to invite Umesh ji to kindly felicitate Sunil ji, who is a former treasurer of the governing body of our college. Thank you, sir. It is also my pleasure to invite Neha ma'am to kindly felicitate Nimita ma'am, who is the convener of Shivaji College for this event. Thank you, ma'am. And finally, I would also like to invite Shikha ma'am to kindly felicitate Dr. Shotambri ma'am because she's currently representing the organizing team of Shivaji College, and she is a former teacher in our college as the biomedical sciences department. I've also had the honor of working under her in the Thank you, ma'am. And before we kind of wrap up this event, just one request to every participant here. All of you are required to fill up your feedback form, which you need to do from the same Beams link that was provided, that you registered from. The code which you would require to fill up that form has already been sent to your mail. So please fill up that form because that's necessary for the generating your participation certificate. Thank you.
Now the student activities will start to begin. So the participants will please stay here for that session. सब गए भी रूम खाली है पॉइंटर होगा ना पॉइंटर यहाँ नहीं नहीं मेरे को नहीं दिया सर मैं स्टार्टिंग में नहीं था मैं बीच में एंकरिंग में आया था लाइक सुबह जो होती है 10 नंबर है तो कॉल करिए है हमारा है अब क्या है सूरज सूरज पॉइंटर जीडी के लिए कैसे अरेंजमेंट करें भारत पूछा स्ट्रीम बंद करनी क्या करनी है तो एक एक करके पोडियम पे बोलेंगे वहीं से नहीं उनको यहाँ पे खड़ा करेंगे हम चेयर्स आगे को करना सारी ठीक है यहीं पे खड़ा करेंगे यहीं पे खड़े होकर बोलेंगे ठीक है माइक थैंक यू सर थैंक यू सो मच कॉर्डलेस माइक होगा अब हम निकाल लें अपना ताम झाम क्या ये जी का इवेंट चल रहा है ना सर इवेंट खत्म नहीं हुआ अभी खत्म नहीं हुआ है तीनों माइक्स काम कर रहे नहीं कर रहे मैडम कुछ काम नहीं कर रहा अभी स्ट्रीम कुछ काम नहीं कर रहा है ऐसा मत बोलो आओ ना प्रिंसिपल ऑफिस ये रखिए वाले